तो वेलकम दोस्तों। आज मैं रिएक्शन दूंगा मार्केट पे रिएक्शन दिया जाएगा आज, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और पहले तो आपने मेरा इंडियन मार्केट पे रिएक्शन देख लिया था, इमर्जिंग मार्केट पे, तो अब हम थोड़ा यूएस पे भी फोकस कर लेते हैं कि यूएस में क्या हो रहा है। तो डेली जब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए करेंटली क्या इवेंट्स चल रहे हैं, कहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हुई है, कौन सी कंपनी का सीईओ क्या सोच रहा है, कौन सा पेंशन फंड, हेज फंड, बॉन्ड ट्रेडर, करेंसी ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, और मार्केट्स में उन्होंने क्या बोला था और क्या हुआ और अब क्या बोल रहे हैं, तो उस और क्या हो सकता है, उस टाइम के करंट हिस्टोरिकल करंट सिचुएशंस क्या थी, फिर क्या हुआ और अभी सिचुएशंस क्या है। तो उस हिसाब से आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि आज क्या होगा, आज की रात को हम क्या, क्योंकि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, इट जस्ट राइम्स। तो रिपीट तो हम नहीं कर सकते, हमें कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, पर हम जैसे एक ट्विन बजती है ना, उसके बाद जो हमें गाना तो पता चल जाता है कि अब ये गाना बजने वाला है। उसी तरह ये है कि अब क्या लोग अपने मुंह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और फिर मार्केट में क्या गाना बजेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं मुंह से कौन सी धुन बजाई जा रही है लोगों के। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। ये चैनल है मैवरिक ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो ये मैं बहुत देखता हूँ और किटको न्यूज़ भी देखता हूँ, और इन्हीं को देख के अपने ट्रेड्स प्लान करता हूँ और इंट्राडे प्लान्स करता हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स नहीं प्लान करता। लॉन्ग टर्म नॉलेजेबल बहुत अच्छी है इनकी वाइज, बट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अभी मैं करता नहीं हूँ, मोस्टली इंट्राडे करता हूँ। तो आप मेरी स्ट्रीम्स भी देख सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, 10,000 रुपये का। उसमें लाइव ट्रेडिंग मैं करता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो उन ट्रेड्स को। और उसमें मैं पर्सनल इंसाइट्स भी देता हूँ कि कल क्या होगा, कौन सा ट्रेड मैंने क्यों लिया, मैंने क्या सोचा। तो आपको एक ट्रेडर की तरह सोचने का भी, जो आपको किसी किताब में, किसी इंटरव्यू में, किसी न्यूज़ चैनल में नहीं मिलेगा, वो मैं आपको आपके सब्सक्रिप्शन में देता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज मार्केट अपडेट अबाउट यूएसए एंड इंटरनेशनल कंट्रीज। आइए देखते हैं। I had everybody in the country weighing themselves 10 times a day, and me just sitting there like John D. Rockefeller weighing machines. The allowance when I was a little boy was a nickel a week, but I liked the idea of having a little more than a nickel a week to work with, and I went into business very early. I started selling Coca-Cola door to door. I sold gum door to door, or sold Saturday Evening Post, Liberty Magazine, Ladies Home Journal, you name it. I think I enjoyed the game almost right from the start. ये देखो वॉरेन बफेट आ गया। वॉरेन बफेट की ज़िंदगी देखो यार, ये बंदा ना कंपाउंडिंग कराता है। 2015 से लेके 2022 तक इन्होंने कोई पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया ही नहीं। कैश पे बैठे रहे, कैश लेके बैठे रहे और देखते रहे मार्केट में हो क्या रहा है। तो इस लेवल की पेशेंस चाहिए होती है। और एक 11 साल 12 साल की उम्र से ही इन्होंने किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उस लेवल की डेडिकेशन भी। तो बर्कशायर हैथवे के इतिहास पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लेना। बट अभी तो यही है। कोई आ गया है, 1 मिनट।
दोस्तों, तो कोई भैया आ गए थे यार, डिलीवरी वाले ना, तो डिलीवरी ले लूँ ज़रा। चलो स्टार्ट। So during medical school, I put up a Yeah. website, some ideas on stocks and markets. As I graduated medical school in 1997, Microsoft out of the blue offered me $1 a word to write for the new MSN Money website. Being wordy and being in debt, naturally I said yes. So therefore, during my medicine internship, I wrote for Microsoft and ran my website. There were synergies between two of the three, and I had unknowingly found a back door to Wall Street. None of this was nearly as well planned as it seems in retrospect. There were a number of crises, including a divorce, and at one point I was so despondent over my direction that I even applied to law school. Again and again, I figured as long as I kept asking questions, working so hard to answer questions, I would eventually find my way. As I turned 29, I ran out of reasons why I couldn't or shouldn't, second. left medicine. I figured as long as I kept asking questions, working so hard to answer questions, I would eventually find my way. As I turned 29, I ran out of reasons why I couldn't or shouldn't, and left medicine to start an investment firm. At that point, the decision came very easily. As perhaps should be the case more often than not, I simply weighed the paths before me without considering the path on which I had been. At Cyan Capital, my job 24/7 was to ask questions and seek answers. I mostly examined stocks and bonds as long investments. But one day I came across a subprime residential mortgage-backed securitization. And I wondered if I could figure out any of that. Other questions soon followed. Why are home prices diverging up and away from the household income trend line? Answer, if it's not income, it's leverage. What exactly are the incentives of lenders that make mortgages only to sell them on through to Wall Street? Answer, volume at the expense of credit standards. When interest rates bottom, how far could lenders push mortgage terms in order to keep refinancings, home prices, and loan volumes rising? The answer to this question would put a ticking timer on the boom and a date on the crash. देखा दोस्तों, तो माइकल बरी ने क्या कहा कि जब ये 2006 में जब इसने देखा ना कि प्राइस लोगों के मकानों के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसने देखा कि इनकम तो बढ़ नहीं रही, तो जब इनकम नहीं बढ़ रही तो प्राइस तभी बढ़ेंगे कि जब लोग लोन पे पैसे लेके मकान खरीद रहे हैं। तो इसलिए जितना पैसा लेंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी। मकान तो लिमिटेड है, नॉन प्रिंटेबल एसेट है, तो वो फिर उनकी प्राइस बढ़ेगी। तो कब तक बढ़ेगी, कब तक सस्टेनेबल है, कब तक लोग लोन ले लेंगे? तो वो माइकल बरी को समझ आ गया कि अब ना ये घंटी यहाँ पे कुछ ख़राब होने वाला है काम। क्योंकि 2008 में भी जैसे अभी वो बिजनेसमैन का मैंने आपको बताया था ना, बिजनेसमैन कैसे कह रहा था सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, चार्ट को कहाँ से कहाँ दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही 2008 में भी था। उस टाइम भी फेड ने बोला कि कुछ भी गलत नहीं है, यूएस फेड ने, कि कुछ भी ख़राब नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। पर माइकल बरी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो उन लोगों ने लोन ले लिया है उनसे तो अब लोन की पेमेंट ही नहीं हो रही। वो तो उनकी तो जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो AAA नहीं CCC रेटिंग है, BBB रेटिंग है। उसको बैंक उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहे हैं, क्योंकि बैंक का बिजनेस है लोन देना, बैंक को पैसा ही वहाँ से आता है। जैसे आटे की मिल में आटा बनता है ना, बैंक में बैंक लोन बनता है। तो ऐसे फिर उन्होंने देखा कि ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो इसने वहाँ पे सेल लगा दिया कि भाई अभी बॉन्ड्स को बेचो, मॉर्गेज सिक्योरिटी बॉन्ड्स को बेच दियो, सेल कर दिया वहाँ पे, ठीक है, सेल। और डॉलर अपने पास रख लिया, अपने पास और सेल कर दिया। वो डॉलर को लोन पे लेके सेल मारा, तो डॉलर के स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस जताया। और अभी भी वही टाइम है, ये भी वही टाइम है डॉलर की स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस जताने का। अभी भी सबको बताया जा रहा है सारी इकोनॉमी ठीक है, सब बढ़िया है, इनकम अच्छी है, कुछ नहीं होगा,
ये इतना क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ गया वो बढ़ गया, जबकि बढ़ा है नहीं, नंबर्स में खुद ही आपको मैंने एनालिसिस करके दिखा दिया था। एनीवेज फिर से यहाँ पे देखते हैं, ये चैनल बहुत अच्छा है। पीछे से One stock brings Warren Buffett versus Michael Dell. We'll cover the fundamental details of that particular stock. But before we start, let's go back to 1999, the heydays of the dot-com bubble, because it is eerily similar to what's going on right now in the stock market, the insanity, the mania, the bubble, and the aftermath. Now, Warren Buffett back in the dot-com bubble was mocked and made fun of because he is a value investor. He follows timeless principles of investing, and he seldom diverts from these principles, regardless of what's going on in the stock market, regardless of manias, bubbles, bull markets, bear markets. It doesn't matter. This man sticks to the rules. He has been investing for almost 3/4 of a century, and his approach never gets too old, and he always emerges with the last laugh. Back in 1999, Warren Buffett was actually mocked. He's been called too old. This is back when Warren Buffett was a young man in his 60s, that his approach to investing is outdated, that he doesn't understand the new world of the dot-com, the internet, technology, and therefore the rules that Warren Buffett has been following are not applicable. कोई ना दोस्तों, डोर पे आ गया, 1 मिनट। भी नहीं आया, ऐसी चूतिया बना दिया। Anymore. The world is changing, and this time it is different. Well, guess what Warren Buffett was doing back then? He stayed quiet. He issued warnings once in a while, but for the most part, he's been quiet. His wisdom from that time is something we should all learn from, specifically given the circumstances that we have in the stock market right now. Let's go back to 1999 and hear what Warren Buffett said about the dot-com bubble back then. Take a look. I sometimes have the feeling, as I look at the stock market today and investment as it is carried out today by so many millions upon millions of people, that to some degree we're engaged in a bit of a pyramid scheme here. That, you know, as long as everybody keeps putting money into the market, it's going to do well, but one of these days somebody may say, whoa, bad idea. Am I being silly about that? No, or? if we had a town and there were 100 people and we all had 100 houses, we all agreed to sell our house to each other at the end of each year up 20%. We kept doing that. We'd all feel very prosperous. And the problem would be is when somebody left town, and then we'd have 100 houses for sale, and or one extra house for sale, and we'd find out what houses were really worth at that point. Is that you know? And of course, when Warren Buffett talks, a lot of people listen. Is that part of what's wrong with the market today? No. What happened is, over the last 15 years, stocks have gone up terrifically, in fact, since 1982. There have been two very important drivers of that. One is interest rates have generally gone down, and return on equity in businesses have gone up. Those are very good reasons for stocks to go up. After a while, the very act of stocks going up starts drawing in other people who get excited about the fact that their neighbor made a lot of money, or maybe they made a little money over the past years. And the action of the market itself captures the attention of more and more of the participants as opposed to the businesses themselves. And that's when you get into dangerous periods. Is that where we are? We're into that to some degree, sure. How dangerous a period is it? You never know. I mean, you know. No, of course you never know. But you know that valuations are high by historic standards. You know that the level of speculation is high by any historic standard. And you know that doesn't... लेवल ऑफ स्पेकुलेशन जैसा अभी हुआ था ना 2021 में, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। NFT, अपना डॉज कॉइन, मीम कॉइन्स, मेटावर्स, फिर उससे पहले EVM चेन्स, BNB कॉइन, तो ये सब बहुत ज़्यादा कुछ। और लैंड ख़रीद लो, इंटरनेट पे ही लैंड ख़रीद लो, मकानों के दाम 100% बढ़ गए 1 साल में। तो इसको बोलते हैं, इसकी बात हो रही है। तो ये सन 2000 में भी हुआ था। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे गूगल के वो बिकते थे,
गूगल जो माइकल सेलर है ना, उसने गूगल का वो खरीद रखा था डोमेन नेम, तो उसने गूगल को वो पता नहीं कितने 20-30 मिलियन में बेचा था, उसने ख़रीदा था $200 में। उस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रखी थी। उस टाइम पे ना सारे के सारे लोग जैसे कि मतलब वेबसाइट बनाने लग गए थे, वेबसाइट में फ़ोटो चिपका के वही लाखों की करोड़ों की वही बिकने लग गई थी कि इस वेबसाइट से, और उसको ये बोल के बेचा जाता था कि देखो यहाँ से इस पे इतने लोग आए, इस पे इतनी फ़ोटो लगी, इतने लोगों ने देखा, इतनी हमें एडवर्टाइजमेंट मिली, जैसे गूगल और फेसबुक आज करते हैं। और सबसे पहले आज के ज़माने में वही कंपनियां डाउन गई। फेसबुक का शेयर 50% नीचे आ चुका है, गूगल के भी शेयर नीचे आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट टिका हुआ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ना गवर्नमेंट से बैंक रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, डिफेंस रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उनका ऐड रेवेन्यू नहीं है, इसलिए वो टिके हुए हैं। ऐड वाले सारे गए। Doesn't go on forever, but you don't know when it ends. It's gone on for a very long time, hasn't it? Yeah, but it's gathered a lot of momentum in the last few years. The last 3 years prior to this one, when the S&P has gone up more than 20% every year, that's almost unprecedented. A lot of amateurs in the game today. Yeah, and it's, it attracts people. Well, sure, as long as they're making money. Yeah. And those people will get flushed out very easily compared to people who really want to buy a business. And of course, almost a year later, the dot-com bubble peaked and the crash started. And Warren Buffett came out of his silence and he said, I told you so. You thought that the timeless rules and principles of investing are outdated, that there is a new world that's different this time around. Valuations don't matter anymore. There is a new generation of investors who are changing the game, etc., etc. All of that at the end did not matter. Warren Buffett came out and said, I told you so. Chasing manias and bubbles pays in the short run. But और जो कंपनीज 2000 में नीचे गई थी ना, उनको उनका स्टॉक प्राइस सन 2000 के वापस आने में पता है कितना टाइम लग गया था। चार्ट पे देख लेना, 2000 से 2015 साल लग गए थे उसके प्राइस को वापस आने में ऊपर उस लेवल तक। तो क्या पता जो 2021 में जिन्होंने टॉप बनाया वो उन कंपनियों को 15 साल लग जाएं, वो क्या पता 2036 में जाके वापस उस लेवल पे आए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रिसेशन अवॉइड करो। ये हमेशा बताया जाता है कि एक बार अगर आपने रिसेशन अवॉइड कर ली ना, तो आप अपनी वेल्थ को 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा सकते हो। 4 टाइम्स ज़्यादा आपको गरीब होने से बचा सकती है। मेरे पापा भी 1990 में उनको लॉस हुआ, 2000 में लॉस हुआ, 1995 में भी क्रैश आया था। तो ये सब उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने कभी भी मेरे से डिस्कस नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करो, समझो, अभी सीखो। it serves a severe punishment at the end, but following the rules and principles of investing pays dividend in the long run. Now, when the dot-com bubble started, and I put it at around 1996, if we follow the charts from that time all the way to the peak of the dot-com bubble at around March 2000, you'll see that the NASDAQ, the index, where the mania was, gained over 700%, while the growth of Berkshire Hathaway was only at around 69%. Obviously, the critics of Buffett at the time said that he's missing out, that his approach to investing is outdated. And by looking at the charts and the results and how lagging Berkshire Hathaway is compared to the NASDAQ proves the fact that the Buffett era is over. But fast forward, since the top of the dot-com bubble of March 2000 all the way to 2007, the NASDAQ was in a bear market. Not for a month, not for 2, but for years. It almost lost half of its value. On the other hand, there was no bear market for Berkshire Hathaway. Matter of fact, since the top of the dot-com bubble all the way till the summer of 2007, Berkshire Hathaway scored gains of over 168.5%, while the NASDAQ was down by almost half. And since देखा दोस्तों, बर्कशायर है तो उस टाइम पे कहाँ पे, ये देखो, ये नैस्डैक उस टाइम पे पहुंच गया था। उस टाइम पे सब वॉरेन बफे को कह रहे थे कि भाई ये देख तेरी कंपनी का शेयर तो ये रह गया, नैस्डैक कहाँ पहुंच गया। तो 1999 में तो सन 2000 में क्रैश आया। उसके बाद देखो उसके बाद क्या हुआ, वॉरेन ये यहाँ पे क्रैश आया, ये देखो बर्कशायर हैथवे कहाँ पहुँचता गया 2007 तक, और नैस्डैक वहीं रह गया। तो ये होता है रिसेशन से बचने का नतीजा का फ़ायदा। रिसेशन से खुद को बचाने का फ़ायदा ये है। but for years, और सही टाइम पे निकलने का, पेशेंस रखने का फ़ायदा। सही टाइम पे डॉलर
कैश रखने का, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपको ऐसे होंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, आपके पैसे तो अब इनसे तो कुछ आएगा ही नहीं, महंगाई इतनी हो जाएगी, इससे अच्छा है कुछ ऐसा ले लो, रियल इस्टेट ले लो, स्टॉक्स ले लो। पर आपको इससे बचना है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि कैश भी एक एसेट है, डॉलर भी एक एसेट है। डॉलर लो, कैश रखना है ना तो डॉलर रखो, रुपया, चाइनीज़ करेंसी, ये सब मत रखो, डॉलर रखो। कि वर्ल्ड करेंसी जिसमें पूरी दुनिया का ट्रेड होता है, जो हर बिजनेस को चाहिए, हर गवर्नमेंट को चाहिए, वो है डॉलर। तो इसलिए डॉलर की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहती है। अगर मेंटेन भी नहीं रहती तो जितना भी दुनिया में करेंसीज हैं उसके मुकाबले डॉलर की करेंसी स्ट्रांग रहती है। चाहे सारी करेंसीज वीक हो जाए ना, तो उनमें से सबसे स्ट्रांग आपको डॉलर ही मिलेगा, बेशक डॉलर खुद कमज़ोर हुआ पड़ा हो। तो इसलिए लोग डॉलर लेना पसंद करते हैं। फिर डॉलर, जब वॉरेन बफे ने डॉलर लिया, उसने देखा हाँ भाई अब सब नीचे आ गया, अब इंटरेस्ट रेट कटने वाले हैं या बढ़ने की उम्मीद कम है, तो फिर उन डॉलर को बेच दो, स्टॉक्स ले लो, ग्रोथ स्टॉक्स ले लो, वैल्यू स्टॉक्स ले लो। तो ये होता है। तो इसमें ना लैग होता है 6-7 महीने का, 1 साल का, तो उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। It almost lost half of its value. On the other hand, there was no bear market for Berkshire Hathaway. Matter of fact, since the top of the dot-com bubble all the way till the summer of 2007, Berkshire Hathaway scored gains of over 168.5%, while the Nasdaq was down by almost half. And since the dot-com bubble in 1996, almost all the way till today, the Nasdaq is up by over 2,000%, while Berkshire Hathaway is up by almost 1,400%. Now, as we see the current bubble that we have imploding, the question becomes, will Berkshire Hathaway outperform the Nasdaq once again, perhaps for years to come? And the answer to that, maybe not. Why? Because Berkshire Hathaway right now is pretty much a proxy for the Nasdaq, and that is due to the weighting of Apple. Now, digging into the details of that, we have to cover the portfolio of Berkshire Hathaway and the latest moves by the Oracle of Omaha. अब ये मैं आपको बता दूं, नैस्डैक की वैल्यू है 0.8 ट्रिलियन। S&P 500 के जो स्टॉक्स आती है ना, इंडस्ट्री टेक स्टॉक्स की इंडस्ट्री की, उसमें वैल्यू है 0.8 ट्रिलियन डॉलर्स। और उसके अंदर भी 20%, 0.8 ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर भी 20% वैल्यू है एप्पल की। तो इसलिए ये मैवरिक बता रहा है कि इसलिए अब क्योंकि बर्कशायर हैथवे ने एप्पल में स्टॉक्स खरीदा है और एप्पल है नैस्डैक में, तो इसलिए अब इन दोनों के जो ट्राजेक्टरी है ना प्राइस की, वो सेम ही हो रही है। This is according to the latest 13F filing, which was about few months ago, so some of this information could actually be outdated, but until we get the next 13F, this is what we have to work with. And according to this report, Berkshire Hathaway opened new stakes in Occidental Petroleum, HP, Paramount, Citibank, Ally Financial, Mickelson, and Celanese. Warren Buffett also added to his stake in Apple, Chevron, Floor & Decor, Activision Blizzard, Liberty Media, General Motors, and Restoration Hardware. On the other hand, Berkshire Hathaway got rid of their entire stake in Wells Fargo, AbbVie, Bristol Myers, and almost the entire stake that they held in Verizon. Likewise, Berkshire Hathaway reduced its stake in Royalty Pharma, Store Capital, and Kroger. Now, Warren Buffett. अब देखो दोस्तों, उसने फिर से टेक स्टॉक्स में मूव इन मारा, HP में मूव इन मारा, क्योंकि HP को $280 बिलियन की सपोर्ट दे रही है US गवर्नमेंट। एप्पल भी अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में घुस गया, इसलिए इसको ऐड कर लिया। एनर्जी स्टॉक्स बहुत बढ़िया डिविडेंड देते हैं, डिमांड भी बहुत अच्छी है। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कुछ पता नहीं है, उसके लिए प्लास्टिक, लिथियम, एनर्जी सोर्स कहाँ से आएगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कौन लगाएगा, ये किसी को कुछ नहीं पता। और इसीलिए GM, जो कि वॉशिंग मशीन्स, ये सारे मतलब एयरप्लेन इंजन्स, गाड़ियों के इंजन, गाड़ियाँ, ये सब बनाते हैं। एक्टिविजन भी वही टेक कंपनी है, ओवरसोल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है इनका टाई अप। माइक्रोसॉफ्ट ने इनको ख़रीदा था $69 बिलियन में पिछले साल दिसंबर में। तो इसलिए ये देखो, वॉरेन बफे एक तो ऐसी कंपनियां खरीद रहा है जो वैल्यू स्टॉक्स है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियां खरीद रहा है जिसको गवर्नमेंट की सपोर्ट है, या फिर ऐसी कंपनियां टेक की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिग मार्केट कैप के साथ है। तो आपको भी इसी तरह खरीदना है। और बेच रहा है कौन सी? बेच रहा है फार्मा की, जिसमें क्योंकि फार्मा की अब कोविड चला गया, जितना इनका मल्टीपल आना था वो आ गया, इसलिए अब इनको बेच दो, कैश ले लो। अब उसमें पोजीशन बना के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी, वेरिजोन, ये छोटी मोटी मोबाइल की कंपनियां ये बेच दी, ओके। और ये वेल्स फार्गो मेरे को पता नहीं है क्या करते हैं बेसिकली। वेल्स फार्गो ये शायद बैंक है, तो बैंक भी अब बेच दिया। तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बैंक इस टाइम पे बैंक
फार्मा, ये ना ओवरबॉट हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे जब इन्फ्लेशन अनाउंस होती है ना, तो इनका 6-7 महीने का ही टाइम होता है, इनको बेच देना चाहिए था। वो 6-7 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट अच्छा हो गया 20-30% तो बेच दो, कैश में मूव इन हो जाओ। और जो जो ओवर सोल्ड है जैसे कि बॉन्ड्स, टेक स्टॉक्स, हाई यील्ड बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उसमें मूव इन हो जाना चाहिए। Did not claim that he's a market timer. He never did that. और इस टाइम पे वॉरेन बफे वही कर रहा है। He doesn't care about market timing. Instead, he cares, as you heard in the beginning of this video, about the numbers. If the numbers make sense, Warren Buffett is in, regardless of where the stock is trading right now, regardless of the technicals, the charts, earnings reports, all of that doesn't matter to Warren Buffett. He's a long-term investor, and as you will hear later in this video, he actually likes it when his stocks go down once he buys, because that allows him to buy at a cheaper price. But regardless of that, for now at least, the timing of these additions and buys were, shall we say, misguided. For example, in his recent additions to Apple, Berkshire Hathaway, Warren Buffett is down almost 5.5%. Likewise, in his latest addition to Chevron, he's actually down about 5 to 6%. He's down almost 8% on his HPQ stake. And so far, he's down a stunning over 33% in his recent stake in Paramount. On top of that, Warren Buffett is down over 22% in his recent stake in Celanese, down almost 19.5% in his stake in Markel, and down over 22% in his recent stake in Ally Financial. So what does that say? Even the greatest investor of all time cannot really time the market stake in Paramount. On top of that, Warren Buffett is down over 22% in his recent stake in Celanese, down almost 19.5% in his stake in Markel, and down over 22% in his recent stake in Ally Financial. So what does that say? Even the greatest investor of all time cannot really time the market. He's not a market timer, but he knows the numbers, at least for now, make sense. And so long as the numbers continue to make sense, he will continue to add to his stake in these stocks. Once the numbers stop making sense, you will see in the next update Warren Buffett getting rid of some of these stocks. But if the numbers make sense, he will actually add to them because he's looking down the road 5-10 years from now. This is the philosophy of Warren Buffett. He's not going to get it right away, but he will get it right in the long run. But these steep losses for now are hammering Berkshire Hathaway's bottom line. In the latest report, Berkshire Hathaway's revenues were up by over 10% year over year. Their expenses were up by almost 6.6% year over year, but they reported a stunning loss of over $43 billion. What was the reason behind that? The answer is, as you can see, the losses in investment. All of these numbers, the portfolio is down. They reported a loss of almost $67 billion. Almost half of that came from the recent declines in Apple stock, and hence the problem with Berkshire Hathaway that they have never faced before. देख रहे हो $60 बिलियन का लॉस हो रखा है इस टाइम पे उनको। $60 बिलियन का लॉस इमेजिन करो दोस्तों जरा। 80,000 करोड़, लगभग 6-5 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है एक कंपनी को। इतनी तो अंबानी की और अडानी की नेटवर्थ है। In their history, Warren Buffett for the first time is facing a concentration problem in Berkshire Hathaway, where Berkshire pretty much became a proxy for Apple. Now, how would Warren Buffett deal with that? Is he going to reduce his stake in Apple? I don't see that as foreseeable because, as you'll hear later on in this video, he really likes the name and believes in it. But will he go on a spending spree to reduce his overall concentration in the portfolio on Apple? That remains to be seen. But for now, Berkshire has a major problem. If Apple goes down, so will Berkshire. This is a problem that we have not seen before in this company. They never had such overweight and concentration on a single stock before, and hence the Apple dilemma. For now, looking at the portfolio of Berkshire Hathaway, these are the stocks with weighting of over 0.5%. अब मुझे क्या लग रहा है कि एप्पल ना अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में घुसा था, इसलिए शायद, और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में भी घुसा था, और इनके पास प्राइसिंग पावर भी है, मार्केट में डिमांड भी है, तो इसलिए वॉरेन बफे ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। बट वॉरेन बफे को ये नहीं नज़र आया कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए तो सारा मटेरियल चाइना रशिया से आता है। वो तो कोऑपरेट कर नहीं रहे, उनको तो डॉलर अब ख़रीदने नहीं है, उनके लिए तो डॉलर अब एक टॉयलेट पेपर की तरह हो गया है। उनके सारे जब्त कर लिए पैसे, तो अब ये एप्पल कहाँ से बनाएगा, कहाँ से ये लिथियम लाएंगे, कहाँ से ये वो लाएंगे, क्या कहते हैं,
कार बनाने के लिए मटेरियल, समझे। और चाइना में इतनी इनकी सेल होती थी और पूरी दुनिया में सेल होती थी, और डॉलर को फिर मजबूत करना पड़ा, तो लोग अब वो भी नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, एप्पल के आईफोन, आई वॉच, जो भी इनका बिकता है। और और इन्होंने वो भी बना दिया अब कि टाइप सी वो लगाओ, ऑक्स हटा दिया, और अपने इनके सारे वो महंगे महंगे एक्सेसरीज़ हैं और चार्जिंग का, ईयरफोन्स का एक ही वो है। तो मेरे को नहीं लगता है अभी है ना मार्केट शेयर लूज़ करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और इसीलिए वो चीज़ वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और वॉरेन बफे को शायद ये चीज़ अभी समझ नहीं आई। एनीवेज, Percentage point of the entire portfolio of Berkshire Hathaway. The names are Citibank, U.S. Bank Corp, Moody's, the Bank of New York Mellon, Bank of America, American Express, Visa, and then in technology they have Apple, Amazon, HP, VeriSign, Activision Blizzard. In media, Charter Communication, SiriusXM, Paramount, and in consumer staples, Kroger, Kraft Heinz, Coca-Cola, in energy, Occidental, and Chevron. In healthcare, the only name weighting of over half a percentage point of the entire portfolio of Berkshire Hathaway. The names are Citibank, U.S. Bank Corp, Moody's, the Bank of New York Mellon, Bank of America, American Express, Visa, and then in technology they have Apple, Amazon, HP, VeriSign, Activision Blizzard. In media, Charter Communication, SiriusXM, Paramount, and in consumer staples, Kroger, Kraft Heinz, Coca-Cola, in energy, Occidental, and Chevron. In healthcare, the only name left in the portfolio is DaVita, and the only automobile company they own right now with such huge concentration is General Motors. But perhaps the most notable trend in Berkshire Hathaway's portfolio is the company's shift toward energy by adding a huge stake in Chevron, not to mention Occidental Petroleum, which, for now, the assumption is Berkshire Hathaway will end up owning the देखा, एनर्जी में कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक्स डिविडेंड भी देते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो नीचे भी चला गया तो 1-2 साल 3 साल में वो प्राइस वापस वहीं पे आ जाता है, स्टेबल है। क्योंकि ऑयल भी एक नॉन प्रिंटेबल एसेट है, गैस भी एक नॉन प्रिंटेबल एसेट है, इसलिए। entire company at some point. So in summary, when we look at the portfolio of Berkshire Hathaway recently, Warren Buffett continues on the same path of value investing. When the numbers make sense, he's going to buy regardless whether the stock is going to go up or down in the short run, regardless of what the technicals look like for now. When the numbers stop making sense and certain stocks run too high, Warren Buffett will likely acquire Occidental Petroleum once its credit situation improves after already flowing near $20 billion into the company, Truist says. Okay. or cease to perform as expected after giving ample opportunity, Warren Buffett and Berkshire Hathaway get rid of these stocks. And the beauty of these moves by Berkshire is that even though Warren Buffett might be down 20-30% in some of his recent positions so far, we get to look at these names, we do our own diligence. If the numbers make sense for us, we get to buy these stocks at a cheaper price, a better deal than Warren Buffett. Now, the other investor that I'm talking about in this video is none other than the big short, Michael Burry. Michael Burry is famous for calling the dot-com bubble and, most notably, the housing bubble in 2007 to 2009. Michael Burry warned back then, but nobody listened. And then when he was proven right, all eyes turned on Michael Burry and he became a household name, at least among the investment community. So when Burry talks, we have to listen. Most importantly, when he warns, we certainly have to listen. But unfortunately, we have this era of delusion, just like we've seen back in the dot-com bubble and the housing bubble, where market participants assume that this time is different. For whatever reason, fill in the blank. Well, Michael Burry comes out and says the ghosts of the 2008 financial crisis are still alive. It's gonna happen again. And the reason is, according to Burry, this inflation problem will last for years. We are finally seeing the blowback of the reckless policy by the Federal Reserve for almost over a decade. ओवर 4 years इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ना इन्फ्लेशन है 9% और फेड फंड इंटरेस्ट रेट है 2.5%। तो अगर इंटरेस्ट रेट वो इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया और इन्फ्लेशन रेट रहा 9%, तो सालों साल लग जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा ऊपर ना हो जाए, या तो इन्फ्लेशन रेट नीचे आ जाए, और जैसे होता है ना, जैसे दो चीज़ें एक साथ आए। तो अब इसको टच करने में कितना टाइम लगेगा? ये इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, इन्फ्लेशन रेट को नीचे आना चाहिए, ये असली इक्वेशन है, ये नॉर्मल बैलेंस है। तो ये आने में कितना टाइम लगेगा? सालों लग जाएंगे क्या?
तो सालों भी लग सकते हैं, जैसे 2000 में हुआ था, 2000 से 2015 तक इन्फ्लेशन नीचे आ गई थी पर स्टॉक्स नहीं ऊपर गए, क्योंकि वो 2000 में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थे, बहुत ज़्यादा, Now, some would argue जैसा अभी है. more than at least 2 decades. But we're seeing the ramifications right now in the form of inflation. It will take a long time for this inflation to go away. And it's not going to go away without aggressive action by the Fed, which will result in a market crash and an economic recession. Now, when we look at the portfolio of Michael Burry, he always has interesting moves in his long portfolio. Some would say that he should stick to shorting stocks because he's not really that good in buying them. But regardless of that, the portfolio of Michael Burry, according to the latest 13F filing, contains a stake in Stellantis, Global Payments, and the disaster of Warner Brother Discovery, Nexstar Media Group, Alphabet, Meta, Cigna, Bristol Myers, Oventive, Booking Holdings, and Sportsman Warehouse. Now, Michael Burry is not a market timer either, as you can see from the results, according to the latest 13F filing. On his stake in Booking Holdings, he's down by over 15%. On the disaster of Warner Brothers Discovery, he's down by over 40%. On his stake in Alphabet, he's down so far by more than 15.5%. In his stake in Meta, he's down by over 23%, and the list goes on and on and on. So these investors, as great as they may be, they're not really good market timers. They make mistakes too, but in the long run, when these investors stick to their principles and the rules, they emerge victorious. And in this case, Michael Burry happens to be an admirer of Warren Buffett's teachings. And here's Michael Burry's thoughts about Warren Buffett according to a recent interview. He says that Warren Buffett is unique and being different is the key to investing success. If you're going to be a great investor, you have to fit the style to who you are. Burry told Lewis, this is the interviewer, he noted that Buffett did not copy his mentor, Benjamin Graham, but instead crafted his own investment approach and philosophy. This is really important. We can admire Buffett and Burry and all of these investors, but do we have to copy them exactly? The answer is no. We can learn from them, their philosophies and approach to investing, but we can craft our own. Continuing, Burry also said that he lacks Buffett's charm and social skills and knew he would never be as popular as the Oracle of Omaha. The Sion Asset Management chief mentioned Buffett several times in previous tweets. Burry's bookshelf underscores his deep interest in Buffett's teachings, even if he does not follow them to the letter. It features Security Analysis, co-authored by Graham and known as the Bible of Value Investing. He also has 3 collections of Buffett's letters to investors in his partnership and Berkshire shareholders. The Sion boss also owns the Warren Buffett portfolio, Mastering the Power of the Focus Investment Strategy. So it is clear that Michael Burry is an admirer and a follower of Warren Buffett's teachings. And this makes the collision between the two investors really interesting. And this collision happens to be around the stock of Apple. Warren Buffett is long, he continues to add, he likes the stock. On the other hand, Michael Burry is actually short via put options. So what do the two investors see in the stock of Apple, the largest stock in the world? Well, let's take a look at the numbers from the latest earnings report and see if we have any signs of trouble or signs that the business is doing great. According to the latest report, net sales for Apple went higher by 1.87% year over year, while the cost of sales went higher by 1.93% year over year, and operating expenses went higher by 15% year over year. So this is a bad recipe because you have a company where the growth rate in expenses and costs is actually rising higher than the growth rate in revenues. This is a problem, and therefore we see the net income year over year for Apple actually being down 10.58%. देखा दोस्तों, जब एप्पल जैसी कंपनी की इनकम डाउन आ गई और वो इमर्जिंग मार्केट में ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वाली जो अभी कंपनी का मैंने एनालिसिस किया था, वो कह रहा है हमारा तो ऊपर जाएगा, हम तो ऊपर जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी कंट्री से, इंडिया की कंट्री से कोई ऐसे इंटरनेशनल इंडिविजुअल ट्रेडर निकल नहीं पाए बड़े नाम के। जो भी निकले, कोई इनसाइडर ट्रेडर बन गया, कोई वहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया, कोई किसी में पकड़ा गया। तो ऐसे चलता नहीं। Operating expenses went higher by 15% year over year. So this is a bad recipe because you have a company where the growth rate in expenses and costs is actually rising higher than the growth rate in revenues. This is a problem, and therefore we see the net income year over year for Apple actually being down 10.58%. On the other hand, the operating margin, meaning how much does the company keep in profits from each dollar it generates in revenue. We're talking, of course, about operational profits, not factoring in taxes or any other factors.
Because the beauty of the operational margin is it tells us whether the business is lean or not, how much it is keeping from each dollar it generates in revenue and profits from an operational standpoint. And in this case, the operational margin for Apple is at around 27.81%, which is actually really good for a company this size. When we look at the different segments for Apple, the growth in sales in the Americas was up by 4.46% year over year. Likewise, the growth in sales in Europe was up year over year by about 1.81%. On the other hand, the growth rate in China was negative by about 1%. Likewise, it was negative in Japan by about 15.75%. On the other hand, it was actually positive by 14% in the rest of the Asia Pacific. So few signs of concern here from China and Japan, but not in other territories. When we look at the different products of Apple, the growth in sales year over year for iPhone was up by 2.76%, while the gross sales in Macs, that's what they call them, down about 10.36% year over year. The growth in sales for iPads was down by 2% year over year. Likewise, the growth in sales in wearables was actually down by about 7.87%, while the growth in services was actually positive by about 12.11%. So we have few signs of concern here. The company is obviously slowing down. We're seeing a slowdown in Mac sales, iPads, wearables, but not a significant slowdown in iPhone, the crown jewel of the company, not a significant slowdown in the highest growth factor of the company, services, and certainly the drop in Chinese sales was not as bad as many have anticipated. But we have to look for trends and whether there is a divergence in these trends. Recent divergence indicating that the company is doing better than usual or worse than usual. Are we seeing a slowdown in certain trends or acceleration in certain trends? Well, to me, the most important trend is the growth in revenue from iPhone sales. We'll go back all the way to 2019. As you can see, the trend peaked at around 2021 when iPhone sales grew by over 50% year over year. But when we fast forward to this year, the rate of growth in iPhone sales slowed down to 28%. Now, some would argue that this is a distortion, that 28% is not really that bad because we're pinning it against 50% growth rate from last year. But that growth rate happened because of the pandemic, the lockdowns, and the slowdowns of sales in iPhone in 2020. So the base impacts alone exaggerated the growth rate in the sales of iPhone in 2021. But now the company is going back to the average trend pre-pandemic. Another important segment for Apple is the services revenue. Now, I'm a critic of Apple's service revenue because I call it the shakedown money. It's sort of like the mafia. देखा, एप्पल अब ये माफिया इसलिए कह रहा है क्योंकि एप्पल ना अपने जो भी ऐप स्टोर पे जो भी डेवलपर उनकी अपनी ऐप अपलोड करता है खुद डेवलप करके, उसके में जो जान लो कोई गेम है, किसी ने गेम खरीदी तो उसमें से $10 में मिले उस डेवलपर को, तो उसमें से $3 पहले एप्पल लेगा, फिर $7 डेवलपर को मिलेंगे, फिर उन $7 में से भी 50% टैक्स डेवलपर गवर्नमेंट को देगा। डेवलपर को तो ओनली $10 में से $3 बचे, फिर 30% बचा। तो ये business model. I actually call it the iMob because they tend to intimidate and harass app developers to give away 30% of their revenues to Apple, 30% of their sales being cut to Apple just because the app is on Apple's platform. Some would argue that the services revenue is a monopoly and hence the regulatory risk that could come out of Asia, Europe, or even this country, and that could damage the services revenue. But for now, we don't have any clear regulatory risk when it comes to the services revenue for Apple. But is it slowing down in its own already? Well, let's see. The services revenue for Apple peaked in 2021 at around 33% growth rate year over year, and it now slowed down this year all the way to 12% year over year. Now, once again, we could have distortions due to the pandemic and the pent-up demand in 2021, and now the trend is back to normal. The growth rate is not problematic for services, at least right now, from my perspective. Another important factor for Apple is the operating margin. The company is profitable, and so long as it continues to be profitable, the stock will do just fine. अब दोस्तों यहीं पे मैकेनिकलिटी आ जाती है। देखो, हम कहते हैं ना स्टॉक, कोई कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई कंपनी की अच्छी सेल्स होगी, बेशक सेल्स कम हो गई हो पर सेल्स तो अच्छी हो रही है ना, तो उसका स्टॉक ऊपर। ऐसे नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप ऐसे चल रहे हो ना तो कभी भी आप ऐसे और तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, आप वॉरेन बफेट की तरह ड्रॉडाउन में बैठ जाओगे। तो क्या होना है आपको, क्या देखना है, इंटरेस्ट रेट घटा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, सारे एसेट बेच दो, कैश में मूव इन हो जाओ। यही तो ट्रेडर का काम है। इन दी एंड ट्रेडर का यही काम है। हम बिजनेस तो चला नहीं रहे,
हम कोई बिजनेस चलाने तो बैठे नहीं, हम तो स्टॉप बटन दबा के स्टॉक्स खरीदने बैठे हैं और बटन दबा के स्टॉक्स बेचने के लिए बैठे हैं, न्यूज़ देख के। और न्यूज़ देख के खरीदते हैं, न्यूज़ देख के बेच देते हैं, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी जान के बेचते हैं। तो अब जब फ्यूचर में हमको पता था डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, ये पूरी दुनिया की सारे देशों को पता है, सारे सेंट्रल बैंक्स को पता है, सारे हेज फंड्स को पता है, सारे पेंशन फंड्स को पता है, तो एक आप ही रिटेल ट्रेडर को क्यों बाय करके बैठना है? आप भी कैश में हो जाओ ना, 6 महीने बाद खरीद लेना, 1 साल बाद खरीद लेना, 1 साल कैश को रखो, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, या कोई बॉन्ड खरीद के बैठ जाओ, 1 साल का बॉन्ड खरीद लो। 1-1 महीने के भी बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं, क्योंकि बैंक में तो आपके पैसे इंश्योर्ड होते नहीं। $2.5 लाख इंश्योर्ड है यूएस के बैंक में, इंडिया में भी शायद पता नहीं कितना 20-25 लाख है। तो 20-25 लाख बैंक में रखने से अच्छा 20-25 लाख के बॉन्ड खरीद लो, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लो। गवर्नमेंट आपको 10% इंटरेस्ट भी देगी, साथ के साथ आपके पैसे भी सेफ, कोई डूबने का चक्कर नहीं। जब मर्जी जाओ बॉन्ड दो, कैश ले लो, जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा कैश आपको सरकार खुद दे देगी। तो बैंक में पैसे रखने का इज़ नो यूज़, क्योंकि बैंक वाले भी खुद भी यही करते हैं। आप उनके बैंक में पैसे जमा करते हो, वो बैंक में जाके वो आगे जाके कहीं बॉन्ड खरीद लेते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ से 10% इंटरेस्ट लेते हैं, आपको देते हैं 2%, 5%, तो 5% उनकी खुद की कमाई। तो ये है बैंकिंग का बिजनेस। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। आप भी ऐसे अपना बिजनेस खोल सकते हो, अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये बिज़नेस आप खोल सकते हो कि लोगों को लोन दो, फिर वो लोन का एग्रीमेंट बॉन्ड बना के बॉन्ड मार्केट में बेच दो, या फिर लोगों से कैश लो, लोगों को बोलो 5% दूंगा, तो 10% पे कहीं का बॉन्ड खरीद के 5% खुद रख लो, 5% आगे लोगों को दे दो। Fine. सेफ बॉन्ड, ये मैं आपको सेफ तरीके बता रहा हूँ। डे ट्रेडिंग तो रिस्की है, पर ये बहुत सेफ है। Outperform its peers. Well, the operating margin is at around और अगर 28%. आपको डे ट्रेडिंग करनी हो ना, तो मैं लाइव स्ट्रीम चलाता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डे ट्रेडिंग में फुली माइक्रो इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मैकेनिकल्स सबको ध्यान में रखते हुए डे ट्रेडिंग करता हूँ। और आप उसमें ज्वाइन करके आप 110% आप फील करोगे कि हाँ मैंने कोई चीज़ खरीदी है ना, तो वैल्यू की चीज़ खरीदी है। In 2022. It was higher in 2021 at around 30%, but in my opinion, for a company its size, an operational margin of around 28% is actually pretty decent, so there is no problem here. What about China sales? Could we see a problem with the sales in China? Well, it could indeed be a problem for the company because Apple sales in China experienced negative growth by about 1% this year, and this has been a problem since 2019, when the company's China's revenue experienced a decline of about 4% year over year. But then we saw a recovery. In 2020, the growth rate in China sales went higher by 19% and a stunning 58% year over year in 2021. And everybody assumed that the China demand is back on the table for Apple. All of these problems that everybody talked about, that the Chinese consumer is drifting away from Apple for whatever reason, these concerns are over. अब ये देखो 4% से भी 2019 में 19% हुई, 2020 में 58% हुई, 2021 में तो और उस टाइम पे क्वांटिटेटिव ईजिंग थी। 2020 में देखो, 2020 में क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस हो गई थी, और 2021 में भी क्वांटिटेटिव ईजिंग थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं। और अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नवंबर 2021 में, उसके बाद देखो 2022 में 6 महीने में सेल का, 7 महीने में क्या हाल हो गया। तो ये फ़र्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स का। और जब सेल का ये हाल हो गया तो स्टॉक्स का क्या अच्छा हाल होगा। स्टॉक्स तो रिवेन्यू के बेस पे उनका प्राइस डिटरमाइन होता है। जब रिवेन्यू ही एक्सपेक्टेशन, जब 8 महीने पहले ही लोगों को पता था, जो इसमें इंटेलिजेंट लोग थे, कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, अब इन्वेस्टमेंट लोग कम खरीदेंगे सामान, लोगों पे पैसे कम होंगे आने वाले टाइम में, तो इसी टाइम हम अपना स्टॉक बेच देते हैं। तो उन्होंने दड़ रोज़ 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 55,000 करोड़ रोज़ ऐसे स्टॉक की सेलिंग हुई थी नवंबर में 2021 में। लोग हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, लोगों को समझ ही नहीं आया। नवंबर में समझ नहीं आया, दिसंबर में समझ नहीं आया, जनवरी 2022 में समझ नहीं आया। बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, क्या अभी फिर से जंप आएगा? क्योंकि नवंबर तक तो हर जगह हर बार बाउंस आ जाता था। जब जनवरी में बाउंस, फरवरी में बाउंस, मार्च 2021 में बाउंस, जुलाई 2021 में बाउंस, ठीक है, फिर अक्टूबर में बाउंस, अक्टूबर 2021 में बाउंस। फिर इन लोगों को ना बाउंस की आदत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा ही, तो ये चक्कर था। तो आप खुद ही देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का नतीजा क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ जो सेल गिर गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इंटरेस्ट रेट्स के अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। लोग तो सेम है, लोग सेम जॉब पे जा रहे हैं, लोग सेम डिग्रियां कर रहे हैं,
लोग सेम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इंटरेस्ट रेट हुआ। अगर आप कभी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको इकोनॉमिक्स की किसी किताब में नहीं पढ़ाएंगे। यूएस फेड इंटरेस्ट रेट का बादशाह है दुनिया में, यूएस करेंसी बादशाह है, ये कोई आपको कोई भी न्यूज़ चैनल में ऐसा डिस्कस नहीं करेगा। overblown. But now, here we are, once again, we have a slowdown of about 1% year over year in Apple. And this has been a problem since 2019, when the company's China's revenue experienced a decline of about 4% year over year. But then we saw a recovery. In 2020, the growth rate in China's sales went higher by 19% and a stunning 58% year over year. 2022 में 1%. And everybody assumed that the China demand is back on the table for Apple. All of these problems that everybody talked about, that the Chinese consumer is drifting away from Apple for whatever reason, these concerns are overblown. But now, here we are, once again, we have a slowdown of about 1% year over year in Apple sales in China. Of course, Apple bulls will defend that as, well, China had shutdowns and lockdowns in the second quarter of this year, and therefore, of course, Apple sales got hit in China. But once we पर अब लॉकडाउन तो 2021 में भी थे, लॉकडाउन तो इंडिया में भी थे 2021 में। ये क्या बहानेबाजियाँ हैं लॉकडाउन की? ये तो नहीं ऐसे चलेगा। इंटरेस्ट रेट से दिमाग नहीं हटाया जा सकता, ठीक है ना। इनको मैं समझा देता हूँ सारे को, ये न्यूज़ चैनल वालों को, ये लॉकडाउन उठा रहे हैं। 2020 में तो कोई लॉकडाउन नहीं था ना, 1995 में भी कोई लॉकडाउन नहीं था, 1970 में भी कोई लॉकडाउन नहीं था, 2008 में भी कोई लॉकडाउन नहीं था। ये क्या? और सब में कॉमन ये था कि इंटरेस्ट रेट बढ़े। 2000 में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, 2008 में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, 1970 में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े, और मार्केट नीचे आई। जब 2015 में 2015 के दिसंबर में ना, तब भी इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। और तब आप देख लेना मार्केट कैसे ऊपर नीचे 1 साल तक होती रही थी। तब तो कोई लॉकडाउन नहीं था ना। see a normalization of the lockdowns, मेन चीज़ है यूएस फेड। rebound in Apple sales in China, and therefore the next quarter it will be of critical importance. And perhaps the most important number that everybody's going to look at is sales in China. If that number experiences negative growth once again, despite the easing of the lockdown restrictions in China, that would be a major problem for the stock, and it could produce a shock. And that brings us to, is this the theory behind Michael Burry's short in Apple? Because he is mystery man, he doesn't explain why he's shorting Apple. So instead, we have to speculate on why Michael Burry's shorting Apple. Now, I am certain that the slowdown in Apple sales in China is a major reason behind shorting the stock, but perhaps we have an overall general slowdown in the global economy. And perhaps तो इस टाइम पे अब दोस्तों आपने देख लिया शॉर्टिंग, एप्पल को शॉर्ट कर सकते हो। अगर इंट्राडे में एवरेज से नीचे जाए तो आप ये होप कर सकते हो कि हाँ भाई अब एवरेज से नीचे ये जाएगा और तगड़ा जंप ले जाएगा नीचे को। लॉन्ग टर्म नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि मैकेनिकलिटी इज़ डिफरेंट। मैकेनिकलिटी में क्या होगा, बॉन्ड्स खरीदे, मार्केट में देखा हाँ भाई बॉन्ड्स की सप्लाई कम हुई, बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ा, इसका मतलब जो डॉलर था वो मार्केट में लोगों ने सप्लाई कर दिया और बॉन्ड्स खरीद लिए। अब डॉलर की वैल्यू गिरेगी, फिर क्या होगा, फिर बॉन्ड्स जो भी एसेट है ना दुनिया भर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू गिरी तो इन दी एंड जो इक्वलिटी की इक्वेशन में उस साइड का है, राइट हैंड साइड है, वो फिर बढ़ जाएगी। तो बट इसको देखते हुए आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई इंट्राडे में अगर कोई नीचे को जाता है ना तो आप सेल मार सकते हो एप्पल में या नेस्डैक में, और पिछले 1-2 दिनों से ये हो रहा है, सेल की तरफ जा रहा है। we will see recession in the United States, in Europe, in Asia, and this will cause the demand for iPhones to slow down. This is not just the sentiment of Michael Burry, of course, assuming that this is one of his theories behind shorting the stock. It also happens to be the consensus among many analysts, including from Bernstein, who said that Apple's near-term future looks murky as consumer spending slows. So when we see consumers not enjoying stimmies and free cash, that consumer demand slows down. People are not buying iMacs, iPads, watches, and soon enough maybe iPhones anymore, and that could hurt the company tremendously. In this program, we talk a lot about the impact of inflation on consumer budgets, that the consumer has to cut down on non-necessities such as buying iPhones and otherwise because they have to spend more at the gas pump, the grocery store,
on rents, on utilities, things that the consumer deems as necessities, unlike iPhones. You don't have to upgrade your iPhone when you're facing inflation. You might want to delay that until your financials get better, and that could hurt Apple. And this is really the main bear theory against Apple, and it is being proven. For example, Apple already announced that they're cutting down spending and hiring next year because they see a potential downturn in the economy. And another अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, बस एक एप्पल ही ऐसी कंपनी नहीं है जिसने हायरिंग कट करी है। टेस्ला ने भी कट कर दी अपनी हायरिंग, उन्होंने तो फरवरी में ही कर दी थी। और स्नैपचैट, जूम, इन सब ने भी, और ट्विटर, इन सब ने भी अपनी जो वर्कफोर्स है ना वो कट कर दी है। इन्होंने 10% ये ऑलरेडी कट कर चुके हैं। मतलब इनकी अगर 10,000 लोग थे तो ये 1,000 लोगों को काम से पहले ही निकाल चुके हैं। bear theory is, और कब से निकाला? जनवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच के पीरियड में। और अब मार्च 2022 से अपना सितंबर 2022 तक ये स्नैपचैट, ये इन सब ने निकाले हैं लोगों अपने कंपनीज़ के। और जब एप्पल जैसी कंपनियां अपनी हायरिंग ले ऑफ करने लग जाएंगी ना, तब दैट विल बी अ सिग्नल ऑफ रिसेशन। और उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 की तरह फेड अपने इंटरेस्ट रेट घटाएगा और फिर मार्केट में उछाल आएगा, क्योंकि डॉलर जब इंटरेस्ट रेट घटाएगा मार्केट में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू, जो डिनोमिनेटर है एसेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो कि है डॉलर की वैल्यू, जो कि इम्पैक्ट होगी, जो कि रिड्यूस होगी डॉलर की सप्लाई के कारण, और जो राइट हैंड साइड में प्राइस को, एसेट के प्राइस को बढ़ाएगी। Apple holds तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें हम पोजीशन ले सकते हैं, कैश से हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं उस टाइम पे। majority of the weighting in stock ETFs. So if there is a crash in the stock market, the ATM of getting cash out of the stock market becomes, well, the largest stock in the world, the stock of Apple. And this could be another theory behind Michael Burry shorting the stock. Now, why does Warren Buffett like the stock and continues to add to his stake over and over and over again, even though the weighting is becoming a problem for Berkshire Hathaway? Well, perhaps here's one reason. Take a look. I like to buy them cheaper. I mean, it's very difficult. I started buying when the stock was maybe 100. And I was buying it kind of as fast as I could. And then I ended up buying some as high, a whole lot higher. I won't name the exact price, but a whole lot higher. I'd rather have it go down. For one thing, if it goes down, Apple's going to buy a lot of stock back. They're already buying stock back. And if it goes down 10%, it means they get to buy 10% more shares, and my interest will go up 10%. अब 2018 में देखो दोस्तों, 2018 का चार्ट, 2018 से अगस्त 2018 तक ऊपर ही ऊपर गया, पर इसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट रही थी वो ऐसा। और इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी बहुत नीचे आ गई थी, बिटकॉइन 20,000 से 3,000 पे आ गया था। तो बिटकॉइन तो बहुत, ये ना ग्रोथ एसेट्स हैं, हाईली रिस्क ऑन एसेट्स हैं। तो अभी आप रिस्क ऑन नहीं जा सकते हो, रिस्क ऑन एसेट पे नहीं जाना। रिस्क ऑन एसेट पे आप तब जाना जब 2020 की तरह फेड्स अपने इंटरेस्ट रेट्स लोअर करेगा, या फिर अप्रैल में, जैसे अप्रैल 2022 में 21 में इलेक्शन हुए थे ना इंडिया में, इंडिया ने भी लोअर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस किए थे अप्रैल 2021 में। उस टाइम पे आप रिस्क ऑन एसेट्स जा सकते हो। अभी रिस्क ऑफ रहो और वैल्यू स्टॉक्स में रहो, और जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उसमें रहो। More for spending that money than buying shares. So I am benefited by going down. If I were to talk my book, I would talk it down. So here it is. One और theory अगर is किसी चीज़ में नहीं रहना तो कैश, आराम से कैश रख के बैठो, इंट्राडे डे ट्रेडिंग करो, मेरी लाइव स्ट्रीम देखो, मेरे को सब्सक्रिप्शन लो उस लाइव स्ट्रीम का, और वहाँ से डे ट्रेडिंग करो, अपना 2% डेली कमाओ साल का, मतलब डेली का, तो साल का हो जाएगा आपका 500%, वो कमाओ, खुश रहो, देखो, ट्रेड करो, ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। Apple is flush with cash, and they have a share buyback program worth over $100 billion. This is almost the budget of a decent-sized country. Apple going to use all of that cash in buying back stock. Now, I am a critic of stock buybacks. I think they should be banned. I'm a fan of dividends, but your beloved politicians have not fixed the double taxation problem when it comes to dividends. And therefore, companies like share buybacks. They contribute nothing in tangible value. I would rather the company invest that money in R&D, but it is what it is. There is an active Apple put. If the stock goes down by too much, the company has an insane amount of cash to buy the stock and stop the bleeding. And this is one of the theories why Warren Buffett continues to like the stock and continues to add to his stake. Here's another reason. Take a look. If you look at that little piece of whatever it is, that is some of the most valuable real estate in the world.
तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। फेड से भी कोई ऐसी अपडेट आई नहीं है लगता है। तो आज के लिए मैं लगता हूँ मेरे को अपनी स्ट्रीम यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। और इसमें ये था कि अभी भी रिस्कॉन और ग्रोथ एसेट्स की तरफ रुझान थोड़ा हल्का हो रहा है, तो आप सेल ले सकते हैं। मूविंग है 5 मिनट में 20 की मूविंग एवरेज के नीचे सेल अगर क्रॉस ओवर लगता है तो आप सेल पोजीशन ले सकते हैं, बट अपना ज़्यादा स्टॉप लॉस 25 मिनट इंट्राडे मूविंग एवरेज के पास ही रखें। और अगर ऊपर को क्रॉस ओवर लगता है तो आप ऊपर जाने में भी हिचकिचाएं ना, क्योंकि अभी जो मैकेनिकलिटी है और फंडामेंटलिटी है वो एक तरह से ना अलाइंग हो गई है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि रिसेशन रिस्क्स आ गए हैं तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। क्वांटिटेटिव ईजिंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और लोगों को थोड़ी ये भी हो गई है कि रिवेन्यू घटेगा, तो बियर्स एंड बुल्स में बहुत तगड़े बैटल्स हो रहे हैं। तो और इसमें बुल्स को मैकेनिकलिटी जिता रही है, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है फाइनेंशियल वर्ल्ड वाइड वो है इन्फ्लेशनरी। तो इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि यार एसेट प्राइस बढ़ेगा, तो बुल्स इसमें ज़्यादा जीत रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एंड एनीवेज अगर आप सेल लेके बैठे हो तो आपने मान लो दिसंबर में ही नवंबर में ही सेल लगा दिया था और आपका वो सेल ओपन है, तो आप उसको ओपन रख सकते हो, क्योंकि अभी फेड ने कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है। पर अपना बेशक आप ये रखें कि आप अगर प्रॉफिट में हैं तो 10-20% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें या फिर हाफ पोजीशन का प्रॉफिट बुक करें। और बाकी कल की मार्केट अपडेट मैं आपको दूंगा। आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन भी रात शाम को मैं स्ट्रीम करूंगा 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, तो आप देखना। अच्छा लगे तो कमेंट्स में मुझे बताना, और इस वीडियो में भी कोई फीडबैक आप देना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। एंड कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स फॉर गिविंग योर टाइम, और मिलते हैं जल्दी आपसे कल। Until then, have a good day.